will always follow formal practices of business, pay all our taxes and fulfill all legal liabilities and our responsibilities towards our nation. The amount left after fulfilling all our national and citizen responsibilities would be the actual profit for us, and only that is what we deserve. My today's topic is media and entertainment industry, which I am going to cover, and I have studied most of the reports from KPMG, FICCI, IFEB and many other articles. And my objective of this presentation is how media and entertainment industry is changing its strategy and grabbing the opportunities to exist their presence. And mobility has changed and become dominance access over media and entertainment industry. Now, how was the Navratri yesterday? Enjoyed a lot? And what was the traditional Navratri, if I ask? If anyone can tell me? No one? क्या होता था, एक जो ट्रेडिशन होती थी नवरात्रि, एक माता जी का फोटोग्राफ रखते थे या फिर वो एक मटकी छोटी सी रखते थे दिए के साथ, एंड वुमेन्स ऑफ अवर सोसाइटी खुद गाती थी और खुद ही गरबा भी खेलती थी. अब क्या ट्रेंड आया है एंड व्हाई दिस ट्रेंड हैज केम? अभी गरबा में कंपटीशन होता है. कंपटीशन होता है. ओके, ये साउंड सिस्टम एंड ऑल इसमें बात है. साउंड सिस्टम, बेटर साउंड सिस्टम चाहिए, अदरवाइज ओके. व्हाट एल्स? डीजे राउंड. डीजे राउंड. ओके, कमर्शियल हो गया है. वेरी ट्रू. बेस्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ, जैसे जब शहरी में कैसे खेलते हो तो ज़्यादा जगह नहीं होती, और कहीं आप जाते हो the emerging area you okay. What else? लड़की अच्छा ड्रेसअप होती है नवरात्रि के बाद, उनके लिए शादी का रिश्ता आने स्टार्ट हो Okay. Jokes apart, fine. Why this trend has changed is because of demanding customers. How the customers are demanding and what different type of entertainment they want every now and then, because entertainment has become a very dominant for each and everyone in this stress world. Taking ahead, flow of the presentation is introduction, the great disruption, why this came, and media and entertainment industry report 2016, which I have read. The tomorrow begins, as I said, why this disruption has came. Yes, these are the industries, and the media and entertainment industry consists of all these sectors. कौन-कौन सी है ये? कौन-कौन से sectors हैं ये? हॉलीवुड, Movies, cartoon, animations, yes, Disney World, okay, that is theme park, YouTube. music, okay, YouTube is the digital consumption, radio, DJ comes into live events, okay, sports activity, thanks, sorry, IP में like Sunday. okay, yeah, that your client is doing. Thank you so much for your responses. So these are the industries, and most of them I am going to cover. The exact CAGR here I would be covering, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो ज़्यादा इतनी ग्रो नहीं कर रही है, तो वो मैं कवर नहीं कर मतलब because of the time constraint. A decade of mobility and the mobile media consumption today. 20 years ये रिसर्च बता रहा है कि 20 साल से सारे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो सीरियस डेटा जो इंटरनेट एक्सेस यूज़ हुआ है वो ओनली इन पास्ट 5 years. Crossed 4 billion mobile subscribers, over 500 million unique users. अगर ड्यूअल सिम कार्ड्स हो और उसको भी अगर हम इकट्ठे कर ले तो भी 500 मिलियन यूनिक यूजर्स निकलते हैं एज पर द रिसर्च. 180 million smartphone now to reach 690 million by 2020, but low price phones key to adoption. Non-smart feature phones to support data basic apps but will get phased out.
Most media consumed by mobile users via shares on social media and chat apps. What happens? कितने लोग movies देखने जाते हैं, कितने लोग YouTube वीडियो एक्सेस करते हैं. Everything is available on your mobile phones or small screen mobile phones. Now Indian needs have unique challenges and opportunities for this particular industry, media and entertainment. वीडियो ऑन मेमोरी कार्ड, जैसे मैंने कि बताया कि वीडियो ऑन मेमोरी कार्ड या फिर हम कहीं से डाउनलोड करें, जस्ट स्ट्रीमिंग वी विल डू एंड वी विल टेक अ वीडियो. जैसे उस दिन मैंने भूषण से मिस MS धोनी का मैंने पूरी मूवी ले ली. इट्स सो इजी. सो द मोबाइल विल कंटिन्यू टू बी द primary medium of internet access and the media and the entertainment industry also. What are the market share of media and entertainment industry? This is overall industry size INR into billion, and television, prints, films, radio, music, out of the home animation and VFX, gaming and the digital advertising. So this is the media and entertainment industry size, the total size of our India, and these are the advertising revenues which we are covering from that particular and their respective media. Here we would be looking at the television, prints, radio, out of the home and digital advertising, and digital advertising is dominating for advertising revenues from this media and entertainment sector. What is the next 5 years projection is media and entertainment industry will grow by 14.3 CAGR and advertising in the same way revenues will grow by 15.9%. And this is the thing that how this virtual media has dominated this industry, and it has become a challenge for this particular industry that if they are not going to use a technology, it's going to be very crucial for them to survive in this industry. This popcorn से क्या याद आता है? Movies, right? The Indian film industry, I will share, the largest in the world by films produced with over 1400 films produced and over 3.25 billion tickets sold. And this is at US dollar 2.1 billion. It is less than the box office of Avatar. 2015 was heavily polarized right film performance. Percentage of online ticketing, again the digitization. Online ticketing grew by 5 times, 5 multiplying from 6% to 32%. Regional and Hollywood outgoing domestic theatrical. ये जो हॉलीवुड मूवीज है वो भी काफ़ी सारी डोमिनेट हो रही है हमारे इंडिया में, क्योंकि बहुत सारी पर्सन को लाइक आ रहा है कि हम ये हॉलीवुड मूवीज भी देखें, क्योंकि डबिंग होके भी वो देखने को अच्छी लगती है. Now, अगर आप मूवी देखने जाते हैं या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि यू विल जस्ट सी अ मूवी ऑन अ मोबाइल फोन, या फिर आप बाहर से DVD खरीद लोगे या फिर पेन ड्राइव में ले लोगे, राइट? हाउ मेनी ऑफ देम इज डूइंग दिस? सब यही सर की तरह नहीं होते जो हर वीक मूवी देखने जाएंगे, बिकॉज ही इज द मोस्ट फैन ऑफ द मूवीज गोइंग एंड वॉचिंग इन द थिएटर्स. एंड what exactly we are paying and what media and entertainment industry is paying to different sectors. When you pay rupees 100 for a this is just for an example, when you pay a rupees 100 or a 200 for a movie ticket, what is the split of the ticket? Gross is 100%. Entertainment tax we give, that is 30%. Exhibitor which takes 35 rupees, distributor 35 rupees. Producer depends on what deal they have made with the distributors, outright commission, distribution fee, everything which comes under the producer. The co-producer which they have made the deal specific with the media and entertainment industry. PA and funding deal specific, but usually is last in first out, and talent which goes. So this is how they are paying
the per movie ticket we are paying. Now, can anyone tell me what is animation, VFX, and the production process? Both are the production process. What is animation first? कार्टून्स जो डिजिटल एनिमेशन जो होती है उसका भी ग्राफिक्स से बना है Okay. Animated movie. एनिमेटेड मूवी कार्टून्स Okay. What is VFX? So बाहुबली के सीरीज क्रिएट की है Right. That is the visual effects जो बाहुबली में और साउथ की मूवीज में ज़्यादा देखने को मिलता है हमें. ये रजनीकांत ने टिश्यू किया, ये टिश्यू किया, ये यहाँ उड़ गया, वो वहाँ उड़ गया. So that is the visual effects which they are giving to the movies. And what is the production process? नॉर्मल कैमरा से शूट होता है. नॉर्मल कैमरा से शूट होता है, बट प्रोडक्शन प्रोसेस इज समथिंग जो एक अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक मूवी पूरी खत्म हो गई और जो उसको फाइनल टच देना होता है, दैट इज द प्रोडक्शन प्रोसेस. So the Indian animation industry moving up the value chain in this animation sector, and it is dominating sector for media and entertainment industry. Today India has nearly 300 animation, 40 visual effects and 85 game development studios. More than 15K professionals working for them, for this particular sector. How many of them are going at any theme park? How many of them are going? Okay. Only one, which one? Okay. Last time we went with some of the colleagues at Water Kingdom. So I would like to share about this. There are top 10 theme parks in this industry in our India, and most of them are covered all over the India, in Bangalore, in Kolkata. Then we have Hyderabad, the Ramoji Studio. We have SL World. और ये कहाँ से शुरू हुआ ये ट्रेंड? What was the traditional था? पहले क्या था? मेला, right? पहले हम मेले में जाते थे, but now it has also changed because of the demanding customers. Emerging area, destination entertainment. Destination entertainment is something which comes also for a change. We go at some other places. Now this evolution has came from 1980. Appu Ghar in Mumbai, the very famous Appu Ghar in Mumbai. Then the SL World, जब SL World नया आया था तो काफ़ी सारे लोग हर जगह से मुंबई ट्रैवल करते थे just to see what exactly the SL World. सूरत में भी अगर किसी को याद हो तो जॉय खुला था, लेकिन just because they were not good at marketing or the footfalls, and so they have to close down the Joy. 2010 the Imagica and the Wonderla is into Bangalore, and in 2015 these are the 300 billion investment committed to over next 5 years, that is in 2020, and 19% CAGR. So these are the research which they are saying कि in next 5 years theme parks को लेके 300 billion जितना हम लोग investment कर पाएंगे. This is the footfalls in 2014, 130.18 million were the footfalls in the theme parks. Appu Ghar to Atlabs Imagica, जैसे मैंने बताया, and there are the 10 amusement parks in India, but more looking forward by the government. Other industry I would like to take is sports में क्या ज़्यादा लोग पसंद करते हैं? Yes, of course, the cricket game, and cricket is the sport activity और the sports कहा जाता है जो हर लोग देखना पसंद करते हैं. और कभी भी IPL आ जाए या कोई कुछ भी आ जाए, but sports में cricket is the most. But now the government has changed their mind and also has started to invest and started to think on other sports activities also, because it has been seen कि जब भी sports की बात आती है cricket, and cricket is not our national game, but then to क्यों cricket पे ही इतना ज़्यादा हम लोग निर्भर रहते हैं, तो government has started thinking on that particular sector, because sports is one of the activity जो जैसे अभी पैराप्लेजिक भी हुआ है, जो पैराप्लेजिक पर्सन होते हैं वो लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं और इसमें पार्ट लेते हैं.
So beyond cricket, now industry and government is investing in other sectors. But cricket is one of the most sports seen throughout all the sectors. Digital advertisement spend is most of the mobile apps. हमारे इंडिया में कौन सी मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जो हम डे टू डे हमारी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स फॉर न्यूज, ओके, जीमेल, जीमेल फॉर एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, हॉटस्टार, सॉरी हॉटस्टार, हॉटस्टार, ओके, विंग है, ट्विटर है, एंड एज पर द रिसर्च ऐसा बताया जा रहा है कि ट्विटर 75% जितना ग्रो कर रहा है और दिस इज द मोस्ट यूज्ड ऐप बाय द पब्लिक. So digital outperformed expectations in 2015 and looking forward for 38.2% growth. And by 2020 expected to grow INR by 255 billion. Print कभी कॉमिक पढ़े थे वो चंपक चाचा समथिंग वो चाहती थी, कितना इंटरेस्टिंग लगता था तब. चाचा चौधरी भी आती थी. फिर और कौन सी थी? मैगजीन्स. अभी मैगजीन्स आ रही है, इंडिया टुडे, वी आर हैविंग फिल्मफेयर अवार्ड्स की मैगजीन्स. बट दिस इंडस्ट्री इज नाउ not growing as it was growing further because digitization आ गया है and that's why इसका जो growth है is only a 7.3% but steadily it is growing by 7.3. Telecom and e-commerce companies has also preferred advertising on television because television and the जैसे कि मैंने आपको बताया ये जितनी भी applications हम use करते हैं या फिर इंटरनेट भी यूज़ करते हैं वहाँ पे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होता है और डिजिटल मीडिया इज डोमिनेटिंग. सो ये प्रिंट का जो पहले ऑप्शन था कि प्रिंट्स हम लीफलेट जो अभी भी चल रहा है बट इट्स नॉट ग्रोइंग इट एंड बिजनेस कंटिन्यूज टू ग्रो एट स्टडी रेट ऑफ 8%. Now what FDI is looking forward is FDI inflows into the entertainment sector during April 2000 to September 2015 rose to $4.3 billion and as on September 2015 the share of FDI in information and broadcasting was 1.61% of total FDI inflows into the country. And demand growth, supply advantages and policy support are the key drivers in attracting FDI. As I said, now government is looking forward for a good investment in media and entertainment industry. What are the challenges exactly facing this particular industry is many traditional media firms don't get tech which moves so fast that by time they have figured out the web and it's changed. कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना चाहते हैं लेकिन वो एक स्ट्रीमलाइन नहीं होती है और एक स्टेडीली नहीं काम कर पाती है एंड थस सम ऑफ द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर लूजिंग द growth because they do not have a proper technology. A strategic focus on technology direction will be crucial for media and entertainment industry firms to survive and thrive in the connected social digital age. My sources of this particular is KPMG, FICCI. I have read many articles of IFAB also, and thank you so much. My scope of improvement is, I think I was so fast, but I have to be because I want to cover most of the media and entertainment sectors. Scope of improvement and the major learning which I have gone through while reading this report of 2000 media and entertainment particular industry is to be in touch and to be in constant learning of this media. क्योंकि
what I have observed from last 6 to 7 years, I'm not in touch with the television. No, not a daily soap, and not a sports activity. Then what was my favorite channels was Discovery, National Geographic, some of the cartoons. So I was not in touch. So the major learning थी, अगर मुझे एक थोड़ा बेसिक नॉलेज भी चाहिए तो मुझे टेलीविज़न भी देखना चाहिए, तो शायद मैं इस पे और कुछ अच्छी तरह से ऐड कर पाती, क्योंकि जब भी कुछ नया आता था एनिमेशन को लेके, कार्टून नेटवर्क को लेके, तो आई वांट टू सर्च ऑन द गूगल बिकॉज आई एम नॉट इन टच ऑफ द टेलीविजन एंड सम ऑफ द मीडिया ग्रुप लर्निंग। यस, एक चीज़ जो मुझे लगा, शायद ये प्रेजेंटेशन में था नहीं लगभग, पर मुझे जो एक ये समझ में आया कि मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो वो है डुप्लीकेशन एंड पायरेसी। इंडिया में हाईएस्ट रेट है इन्वॉल्व तो जहाँ पे चीज़ों का डुप्लीकेशन होता है। मुझे याद है कि एक ज़माना जब टी सीरीज़ की कैसेट आ रही थी, और टी सीरीज़ और एक और कंपनी थी HMT कैसा टिप्स, है ना, तो वहाँ पे वो लोग को रॉयल्टी मिलती थी सालों साल, यानी एक बार उसने गाना एक सॉन्ग गा दिया है उसके बाद उसकी रॉयल्टी सालों तक चलती थी, यानी उसकी जनरेशन टू जनरेशन उस रॉयल्टी को यूज़ करते थे। लेकिन जब से इंटरनेट आया है तो पहले लोग डाउनलोडिंग की लाइन लगती थी, मोबाइल में डाउनलोड कराने के लिए लोग जाते थे, और जितने भी रिटेल शॉप्स हैं वहाँ पे लगभग मेजर जो अर्निंग सोर्स था वो डाउनलोडिंग था। लेकिन जैसे ये इंटरनेट आया और लोगों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, वो पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई, यानी एक अच्छा बिजनेस, लेकिन वो एक्चुअल में जेन्युइन नहीं था, वो सारा ही डुप्लीकेशन और पायरेसी के ऊपर चलता था, और बहुत सारी रेट पड़ती थी और बहुत सारा जब्त होता। लेकिन ये मुझे चैलेंज ये समझ में आ रहा है कि इंडिया में डुप्लीकेशन को रोकना, क्योंकि आपने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री का रेवेन्यू कम है, तो कारण यही है कि अभी जैसे आपने भूषण से ले लिया तो आपने तो कोई पे किया नहीं, है ना, तो ऐसा ये मूवी घूमती जाएगी, तो धोनी को क्या मिलेगा पता नहीं है, डायरेक्टर को क्या मिलेगा पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डुप्लीकेशन और पायरेसी की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता है इस इंडस्ट्री में। रोशनी, 3 लर्निंग्स। फर्स्ट वन, जो आपने वो मार्केट शेयर का ग्राफ बताया था, तो उसमें जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि 3 मीडियाज विच आर doing very well among the all things. First one is TV, second is digital, which is on top of the list, and third one is radio. So now if I connect this with Mastermind and our services, the learning is that how we as an organization can connect to these 3 medias and utilize the potential of that media and generate awareness among the entrepreneurs that are there. So that is one, and we are moving into a same path because we have done so many digital marketing presentations and everything. So probably we are thinking on the same lines. So that is one. Second, जो sports का आपने बताया था, cricket is the most seen और maximum sport जिसको गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है, जो भी है। पहले की गवर्नमेंट कबड्डी जैसे स्पोर्ट को प्रमोट कर रही थी, हॉकी अपनी नेशनल गेम में तो वहाँ पे प्रमोट कर रही थी, फिर अभी लोगों को क्यों पता चल रहा है? बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ मीडिया। सिंस द गवर्नमेंट हैज चेंज, पहले इतनी सारी टेलीकास्ट नहीं होते थे हॉकीज के और कबड्डीज के लोकल इतने टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती थी। दैट इज द ओनली रीजन पहले वो लोग क्रिटिसाइज करते थे कि क्रिकेट पे ही फोकस है, बट नाउ मीडिया के पावर से वो दिखने लगा है। सो दैट इज सेकेंड। और द थर्ड लर्निंग इज जो ऑनलाइन टिकटिंग की आपकी बात की थी, द फिगर वाज अ लर्निंग फॉर मी दैट इट इज ग्रोन बाय 5 times almost, 6 to 32%. थैंक यू। मुझे एक चीज़ ये लग रही है कि अभी गवर्नमेंट का तो पहले से ही सबके ऊपर फोकस था, बट ये था कि बीसीसीआई एक अलग बॉडी है और उसके पास फंड सबसे ज़्यादा है, जबकि दूसरी सब जगहों पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता था और वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकारी लोग बैठ गए थे, और उसकी वजह से जितना प्राइवेटाइजेशन अब हो रहा है, जैसे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं हॉकी की, फ्रेंचाइजी दे रहे हैं अपने कबड्डी की और अलग अलग गेम्स की, तो उससे कहीं ना कहीं अभी और ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़े। इंक्लूडेड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टीम परचेज करने के लिए। Anyone else? Yeah. The biggest learning is business through digital platforms are increasing over internet में interest. So
हमें वो भी एक अपॉर्चुनिटी रिफ्लेक्ट किया जाए। Thank you everyone. Roshni, I'll start with the good things first. What I liked about this whole presentation was your conviction and the confidence with which you came in. Your flow of the presentation was good. क्योंकि ये शायद मैं भी observe कर रहा था in spite of what Bhushan shared yesterday के because of that rule of 2 days prior आपको submit कर देंगे तो you start thinking about the improvements you can do in your presentation, your flow, and that's what we discussed when I personally had a 1 hour session with all of some of the team members कि आप कैसे improve कर सकते हैं. That is the rule के जितने दिन पहले आप presentation बना के रखोगे your mind start working on the improvements. जब एंड मोमेंट का बनाओगे तो वो रहता है, वो आज मुझे दिखा भी आपके प्रेजेंटेशन स्टाइल में, फ्लो में, वो सारी चीज़ों में. आई लाइक द वे यू स्टार्टेड विद गरबा इंटरेक्शन, बट उसका मुझे ऐसा लगा उससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था. नॉट जस्ट विद इन स्पाइट ऑफ गरबा इंटरेक्शन कि आप कैसे कल क्या हुआ क्या किया. योर मेजर टॉपिक, मेन टॉपिक वाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. तो मुझे ऐसा लगा कि उसके जितने भी ऑप्शंस हैं, यू कुड हैव स्टार्टेड विद व्हाट आर द ऑप्शंस यू लुक फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस. The moment you start searching in your mind कि मैं entertainment के लिए क्या करता हूँ, तो I go for TV, I go for movie, I go for sports, I might watch and play some kind of sports, music, theme parks, DJ, ये सारी चीज़ें आ जाती है. तो automatically आपने जो segments उसके बाद के slide में दिखाए, इसके अंदर media and entertainment के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती है. What I do, I might go for a magazine to read, I might go for some online परचेजिंग. ट्विटर पे जाके देखता हूँ, या फिल्म फेयर का कुछ भी देख सकता हूँ, मैं गूगल पे ऑनलाइन देखता हूँ. तो दिस आर द वे ऑफ एंटरटेनमेंट. तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते थे, ये बेटर रहता. बट आप मुझे ये भी लगा कि आप इंफॉर्मेशन काफ़ी सारे लेके आए, बट स्टिल जो इफ यू रिकॉल एंड रिमेंबर, मैंने इंडस्ट्री के बारे में जब आपके साथ इंटरेक्ट किया था तो कुछ पॉइंट बताया कि अब जब आप इंडस्ट्री के बारे में बात करते हो तो ये चीज़ें तो आनी ही चाहिए. जैसे SWOT एनालिसिस, ओवरऑल इंडस्ट्री की साइज कितनी है. आपने वहाँ पे एक ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें दिखाने की ट्राई की, पर उसमें से भी ओवरऑल MNE की साइज कितनी है, इंडस्ट्री का कितने करोड़ों का टर्नओवर है, या उसकी वैल्यूएशन कितनी है, वो नहीं आया. SWOT एनालिसिस कहीं पे भी नहीं आया कि आज कहाँ किस जगह पे जा रही है ओवरऑल इंडस्ट्री. हाँ, उसके नीचे बहुत सारे सेगमेंट्स है, उसको आपने कवर करने की ट्राई डेफिनेटली की. उसके अंदर भी बहुत सारा आप कवर कर सकते हो. तो शायद ऐसा भी हो सकता था कि इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड करके फर्स्ट पार्ट में मेजर आप कवर करते, सेकंड पार्ट में और कुछ लेके आते, ये भी शायद हो सकता था. बट ओवरऑल डेटा बहुत सारा लगा, इंफॉर्मेशन बहुत सारी लगी, पर और अच्छी तरह से उसको डिस्प्ले किया जा सकता था इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ SWOT, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन. दैट्स माई फर्स्ट इनपुट. जैसे बाकी सबने बताया कि 6% to 32%, वो मेरा भी एक अच्छा लर्निंग था डिजिटलाइजेशन की वजह से. आज अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो हर 3 में से एक बंदा ऑनलाइन जाके टिकट परचेज कर रहा है. दैट्स ग्रेट नंबर्स, और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. आज अगर हम सूरत और बाकी सारी सिटीज, छोटी सिटीज में बैठ के भी प्रीफर गो एंड बुक ऑनलाइन, जहाँ पे हमको 16% एक्स्ट्रा देना पड़ता है टैक्स, सर्विस टैक्स, फिर भी वी गो एंड बुक. And why? Because we can get our selective seats, we can get whatever we want. कौन से शो में कहाँ क्या, तो वो ईज आ जाता है आपकी लाइफ के अंदर. तो वो इसी की वजह से 6 to 32% है, और ज़्यादा बढ़ेगा. तो जैसे सुहाग ने शेयर किया, डिजिटलाइजेशन आज बढ़ता जा रहा है, वही एक बहुत बड़ा आउटकम है आपके प्रेजेंटेशन से. स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स. जैसे अपने प्रोडक्शन का सवाल पूछा, व्हाट इज प्रोडक्शन. Now production is a cycle wherein जहाँ 2 टर्म आती है, प्री प्रोडक्शन भी आता है, प्रोडक्शन आता है, और पोस्ट प्रोडक्शन. जबकि आपने जब बाद में एक्सप्लेन किया शकील के आंसर के अंदर, दैट इज ओनली पोस्ट प्रोडक्शन. जब कोई मूवी प्रोडक्शन में होती है, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, वो दोनों सारी चीज़ें कवर होती है. तो वो शायद आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते थे. ओवरऑल आपके लास्ट 2-3 प्रेजेंटेशन जो मैं देख पा रहा हूँ उससे काफ़ी अच्छा था, बेटर था, बट कुड हैव बीन लिटिल बेटर इन टर्म्स ऑफ data flow, in terms of more information, in terms of more analytical part. That's what my thing is. One more input which I want to share is कि आपने extra time नहीं लिया, that's good part. शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, we allow till 9:51, but अगर आप 1 मिनट ज़्यादा मांगते हो तो आपका 0.5 डिडक्ट हो जाता है आपके
टाइम मैनेजमेंट वाले पैरामीटर से. दैट्स व्हाट ऑल जो हम एनालिसिस करते हैं वो सब जानते हैं, बट शायद आप सबको नहीं पता होगा कि इफ यू कैन फिनिश अप विद 950 दैट वुड बी ग्रेट. या थैंक यू सो मच. एनी अनाउंसमेंट विजय? थैंक यू.